Welcome back. My name is Manish Katiyar, Assistant Professor, Access College of Planning and Management, Kanpur. In our last session, we have discussed about the Consumer Protection Act, and I have told you how old Consumer Protection Act 1986 is more powerful with the new Consumer Protection Act 2020, in which they have covered or all online e-platform. And in last session, I have asked you student that I will provide you a link or a website where you can file a complaint against a service provider or a seller in through online mode. So, let us go. This is our new topic, Consumer Protection Act, Redressal Agencies and Penalties. Okay. Now, let us move. Central Consumer Protection Council. What is Central Consumer Protection Council? We have already discussed it. There are Central Consumer Protection Council's rules provide for the constitution of the Central Consumer Protection Council CCPC. Point number 1, it will be an advisory body on consumer issues headed by the Union Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, with the Minister of State as a vice chairperson and 34 other members from different field. This is just a combination how this Central Consumer Protection Council is created and who will be the chairman and member of this council. It will have a 3-year tenure and will have minister in charge of consumer affairs from 2 states from each region, north, south, east, west and नॉर्थ ईस्ट रीजन. ठीक है, ये तो कॉम्बिनेशन की बात हो गई. यहाँ पे रिड्रेसल फ्रॉम फोरम. रिड्रेसल फोरम का मतलब क्या होता है? व्हाट डज दिस रिड्रेसल मीन्स? whenever a consumer is not satisfied with the services or goods, whether these services or goods are obtained through online mode or offline mode, he had certain grievances where he will complain. So, there is a redressal forum. Under this act, 3-tier consumer forum have been established. और ध्यान से समझिएगा, under this act 3-tier consumer forum have been established for speedy and effective remedies to the consumer, and complaint can be filed in any of the 3 forums depending upon the monetary value of the claim. बेसिकली देखिए, हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड की बात कर रहे हैं. इन बोथ दिस मोड, व्हेन इन अर्लियर 1986 देयर वाज नो एज सच ऑनलाइन फोरम, कंज्यूमर हैज़ टू गो टू फाइल देयर कंप्लेन with the state authority, consumer district forum, state and national level. Now, as there is a new Consumer Protection Act, consumer can directly file their complaint through online mode. This is very interesting. Under this act, 3-tier consumer forums have been established for speedy and effectively remedies to the consumer, and complaint can be filed in any of the 3 forums depending upon the monetary value of the claim. We will discuss about the monetary value of the claim the next slide, कि कितने वैल्यू तक का क्लेम कहाँ पे किया जा सकता है. और आपको ये लास्ट स्लाइड में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अप टू ₹5 लाख देयर व्हेन वी फाइल ए कंप्लेंट थ्रू ऑनलाइन मोड देयर इज नो फीस. कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम यानी कि डिस्ट्रिक्ट फोरम, एंड वन ऑफ द मोस्ट एंड मेजर पॉइंट विच मस्ट नो everyone that under Consumer Protection Act you can file your complaint, written complaint. I am talking about your written complaint. You can file your written complaint on 10 rupees stamp paper himself. You don't need any advocate or practicing advocate or legal expert. You himself can file a complaint against a seller or service provider. ठीक. तो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम, डिस्ट्रिक्ट फोरम
State Consumer Dispute Redressal Forum, and third National Consumer Dispute Redressal Commission. यहाँ पे कुछ there are certain monetary limits up to which you can file state, your district level, state level and national level. But in case of online mode, there is no as such restriction. Next, power of the redressal agencies. Who are the redressal agencies? District Consumer Forum, State Consumer and Central Consumer Forum. The power, the District Forum, State Commission and the National Commission have been vested with the power of civil court under the Code of Civil Procedure 1908 while trying a suit in respect of the following matter. क्या क्या पावर होता है? अगर किसी सर्विस प्रोवाइडर या सेलर के खिलाफ कोई कंप्लेन आती है तो इनके पास रिड्रेसल एजेंसीज पर क्या क्या पावर, उसके बारे में डिस्कशन किया जा रहा है. द समनिंग, summon, you know the word summon means the order issued by a competent court. The summoning and enforcing attendance of any defendant or witness and examining the witness on oath यानी कि affidavit ले सकते हैं. The discovery and production of any document or other material object producible as evidence. Third, the receipt of evidence on affidavit, the requestioning of report of the concerned analysis or the test from the appropriate laboratory or from any other relevant source. अगर कोई spurious या adulterated material कुछ पकड़ा गया जिससे कस्टमर को कुछ नुकसान हुआ तो वो प्रोडक्ट को जब्त करके लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए भी सेंड कर सकते हैं. दिस लाइन इज सेइंग issuing of any commission for the examination of any witness. Okay. These are the power which are taken from the Civil Procedure Code 1908. You all know, I mean not you all know, legal expert are very well aware with this. Being a student, you must have the knowledge or awareness of the power of authorities. You can't ignore the, suppose if you are a service provider and someone is, I am not expecting that you will cheat your customer, just mentioning, suppose a consumer protection authority, a state level authority has issued someone and you are a service provider in that case, so you must honor that someone. I am just trying to say. Next. Under the consumer protection rules, the district forum, the state commission and national commission have the power to require any person to produce before and allow to examine by an officer of these agencies such books of accounts, document, other commodities as may be required and to keep such book, documents etc. under his custody for the purpose of this act. Now, you all students must know that the era of cheating has far away from this period. Now, all the authorities have the power just like which are mentioned in the Indian Penal Code, whether it is income tax authorities, whether they are GST authorities. I am quite surprised. Now, these all authorities are the more powerful. Earlier, these authorities were look like a white elephant. Now, they are looking like a dark horse and really taking a very strict action against the cheaters. Next, to produce before and allow to be examined by an officer of any of these agencies such books of they can impound your books, आपकी किताबों को जब्त कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को जब्त कर सकते हैं और उनको एग्जामिन कर सकते हैं. ये इनके पास पावर होती है. अदरवाइज पहले ये पावर हमको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेनी पड़ती थी, उसके बाद हम किसी की बुक्स और किसी के प्रेमाइसिस में जाके इम्पाउंड कर सकते थे. टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन विच मे बी रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट टू एनी ऑफिसर टू स्पेसिफाइड. नेक्स्ट, कंप्लेंट्स टू बी रजिस्टर्ड. कितने अमाउंट तक की कंप्लेंट्स कहाँ पे भी रजिस्टर कर सकते हैं? आपको मालूम है देयर आर टू प्लेटफॉर्म, वन इज ऑनलाइन, सेकंड वन इज ऑफलाइन एंड दिस लिस्ट इज फॉर ऑफलाइन मोड.
डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम फॉर ए कंप्लेन अप टू ₹20 lakhs। 20 लाख रुपए तक की सर्विस प्रोवाइडर या गुड्स से रिलेटेड कोई कंप्लेंट है और आप एक कंज्यूमर भी हैं, देखिए ध्यान रखिए कंज्यूमर का यहाँ पे मतलब है कि आपने कोई गुड्स परचेज करी वो भी सेल्फ यूज़ के लिए करी है, तभी आप कंज्यूमर हैं। अगर रीसेल के लिए करी है तो आप कंज्यूमर नहीं हैं। अगर आप कंज्यूमर हैं तो 20 लाख रुपए तक की कंप्लेन आप डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में फाइल कर सकते हैं, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। स्टेट कमीशन फॉर ए क्लेम ऑफ कंपनसेशन ऑफ above ₹20 lakhs and up to ₹1 crore। District forum 20 lakhs, state commission 20 lakhs to 1 CR, and last one is national commission for a claim of compensation above ₹1 CR। ठीक, next appeal। Earlier in our earlier lecture I have clearly mentioned to you that if a consumer or service provider or seller have consented to move at conciliation mechanism, then they cannot file an appeal। मतलब ये था कि अगर आप being a consumer और सर्विस प्रोवाइडर और सेलर, आप अपना डिस्प्यूट कंज्यूमर फोरम की बजाय आप अल्टरनेट मैकेनिज्म चूज़ करते हैं जो कि मीडिएशन है, मध्यस्थ का है। अपने यहाँ कंसलेशन एंड मीडिएशन एक्ट भी बना हुआ 1994, तो उसके थ्रू अगर आप जाते हैं तो आप अपील नहीं कर सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल कंज्यूमर के अगेंस्ट में आप अपील कर सकते हैं। उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। अ पर्सन एग्रीव्ड, हिंदी में मतलब होता है पीड़ित पक्षकार, द पर्सन हु इज़ नॉट सेटिस्फाइड बाय द डिसीजन गिवन बाय द अथॉरिटीज़। आप एक कंज्यूमर हैं और आपके स्टेट कमीशन ने कोई डिसीजन दिया, तो आप उस डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप क्या हो गए? एग्रीव्ड पार्टी। अ पर्सन एग्रीड बाय an order of the district forum to prefer an appeal to the state। आप स्टेट कंज्यूमर फोरम के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, देन यू कैन फाइल एन अपील अगेंस्ट स्टेट कमीशन फोरम, डिस्ट्रिक्ट कमीशन फोरम इन स्टेट कमीशन फोरम। कमीशन सिमिलरली एनी पर्सन एग्रीड बाय एनी ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ द स्टेट कमीशन में प्रेफर एन अपील टू द नेशनल कमीशन। Likewise, any person agreed by original order or national commission may prefer an appeal to Supreme Court। लॉन्ग प्रोसेस है। अब आप समझ रहे हैं कि स्टेट डिस्ट्रिक्ट फोरम के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, देन यू कैन मूव स्टेट, स्टेट से मूव नहीं है तो नेशनल, और नेशनल कमीशन के डिसीजन से आप सेटिस्फाइड नहीं तो सीधे आप सुप्रीम कोर्ट भी जाने का रास्ता आपके लिए खुला है। All such appeals are to be made within 30 days from the date of the order। Suppose स्टेट कमीशन ने आपको ऑर्डर दिया, ऑर्डर की कॉपी आपके पास आ गई, एंड यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन गिवन बाय द स्टेट अथॉरिटी, देन यू कैन फाइल एन अपील और हायर अथॉरिटी within 30 days। Basically the word appeal means filing a complaint with higher authorities। अपील का सिंपल मतलब होता है कि आप हायर अथॉरिटीज़ के पास कंप्लेंट अपनी कर रहे हैं, करना है आपको। ये अपील शब्द आपको जीएसटी में भी मिलेगा, इनकम टैक्स में भी मिलेगा, और इनकम टैक्स में तो बहुत ही, और जीएसटी में तो बहुत ही कॉमन बात है अपील करना। नेक्स्ट, ऑल सच अपील हैज टू बी मेड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। हाउएवर द कंसर्न अपीलेट अथॉरिटी में एंटरटेन एन अपील आफ्टर द सेट पीरियड ऑफ 30। करने के अथॉरिटीज़ को लगता है कि रीजनेबल कॉस्ट थे डिले होने का, तो वो आपके अपील को 30 दिन के बाद भी एक्सेप्ट कर सकती हैं। द पीरियड ऑफ 30 days वुड बी कंप्यूटेड फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर बाय द अपीलेंट। देखिए, हर कोर्ट एक ऑर्डर इशू करता है, तो जो ऑर्डर आपको पास इशू हुआ यानी कि सर्व हो गया, आपको मिल गया, तो उसके बाद से 30 days काउंट करने हैं। ये यहाँ पे बात बताई गई है। ये काम आपको नहीं करना होता है अपील के लिए, तो फिर आपको यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ द लीगल एक्सपर्ट और एडवोकेट्स। नेक्स्ट, कैन ए कंज्यूमर कंप्लेंट बी फाइल्ड ऑनलाइन?
ये आपको एक साथ दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, क्या कोई कंज्यूमर अपनी कंप्लेन ऑनलाइन फाइल कर सकता है? आज की डेट में तो FIR भी ऑनलाइन होने लगी है, अक्सर आपने सुना होगा, मे बी किसी लोगों ने यूज़ भी किया होगा। Registered users can lodge a complaint online with the National Consumer Helpline portal of Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. Users need to register themselves. सारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस एक सेपरेट विंडो खुल के आती है, आप देखेंगे. With the portal to file or lodge their complaint online. One can also check the status of already filed complaint, and link is given www.onlineindia.com, onlinelegalindia.com. This is the website where a consumer can file a complaint against the seller, service provider, if it is, or a e-commerce retailer, if he is not satisfied with the services, product, quality, assurance, payment mechanism, he can simply file an appeal. And you know, when you file an appeal, I have already discussed this, whenever you file an appeal online, there is no as such requirement or monetary requirement of fees. Okay. Now, penalties. Penalties for whom? Penalties for service providers, e-commerce retailers and seller of goods. Act deals with penalties and provide that failure or omission by a trader or other person against whom a complaint is made or the complainant to comply with any order of district forum, state commission, national commission shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 1 month, but which may exceed 1 to 3 years, or with fine of not less than rupees 2000, but which may extend to 10,000 or with both. कह रहे हैं कि कोई डिसीजन का दिया कंज्यूमर फोरम अथॉरिटीज़ ने किसी भी कस्टमर के फेवर में, और उस डिसीजन को फॉलो नहीं कर रहे, चाहे रिटेलर हो, चाहे सेलर हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, तो उसके लिए कह रहे हैं मिनिमम 1 महीने से लेके 3 साल तक की सज़ा है, जेल की सज़ा है, जेल भेजा जा सकता है, और फाइन मिनिमम 2000 एंड मैक्सिमम 10,000 फाइन इम्पोज किया जा सकता है, और दोनों भी किए जा सकते हैं. However, on being satisfied the circumstances of any case so required, the district forum or the state commission or national commission may impose a lesser fine or a shorter term of imprisonment, all offences under the act to be tried summarily. ठीक. Next है, I have compiled some important list of some consumer cases so that you may get an idea of deficiency in services. Like you all know, when you purchase a particular product or a service, if you purchase a product and that product is not an optimum quality, then you may complain your retailer or your service provider. But here are some decisions which were taken by the consumer court. I have just mentioned their name, not case law, basically just an incidence. Number 1, failure to provide basic safeguard in swimming pool. स्विमिंग पूल आप यूज़ करते थे, फीस पेमेंट कर रहे थे उसका, लेकिन स्विमिंग पूल आपको बेसिक सेफगार्ड प्रोवाइड नहीं कर रहा था. डिसीजन आया था, कह रहे हैं कि डिफिशिएंसी इन सर्विसेज हुआ था. Second, removal of ladder of an air cart while disembarking by the passenger, deficiency in services. उतर नहीं पाया कोई कंज्यूमर एयरक्राफ्ट से और आपने सीढ़ी हटा ली, तो डिफिशिएंसी इन सर्विस का केस बना. ये थर्ड पार्टी लाइबिलिटी के केसेस भी बनते हैं. कभी आप डिटेल में इनको पढ़ेंगे, जब जो स्टूडेंट इंश्योरेंस सेक्टर में जाएंगे उनको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जब पढ़ने को मिलेगा तब देखेंगे इन चीज़ों को. ये बड़ा यूनिक केस है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ. अ डॉक्टर क्वालिफाइड टू प्रैक्टिस होम्योपैथिक सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन्स एंड ट्रीटिंग ए पेशेंट विद एलोपैथिक मेडिसिन, पेशेंट डाइज, गिल्टी ऑफ नेग्लिजेंस.
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कवर होगा। फॉल फ्रॉम ए रनिंग ट्रेन वाइल पासिंग थ्रू वेस्टेबल पैसेज, डिफिशियंसी इन सर्विसेज। अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भरे हुए हैं। नेक्स्ट है रेपुटेशन ऑफ इंश्योरेंस क्लेम बिकॉज ऑफ ड्राइवर डिड नॉट हैव ए वैलिड लाइसेंस, ड्राइवर रखा हो वैलिड लाइसेंस नहीं है, डिफिशियंसी इन सर्विस है। प्रीमियम पेड टू द एलआईसी एजेंट बट द एजेंट डिड नॉट डिपॉजिट द प्रीमियम, डेथ ऑफ द इंश्योर्ड, नो डिफिशियंसी ऑफ सर्विसेज ऑन द पार्ट ऑफ द एलआईसी। बिल्कुल सही बात है, आपने अपने एजेंट को प्रीमियम जमा करने के लिए पैसे दिए लेकिन एजेंट ने प्रीमियम जमा ही नहीं किया, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। लेट द बायर बी वेयर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस टॉपिक इन द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ये आपके लिए जिम्मेदारी थी कि आप अपने इंश्योरेंस एजेंट से बोलें सर मुझे रिसीट दीजिए मेरी, ठीक। एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और मेडिकल नेग्लिजेंस, देयर आर द न्यूमरस एग्जाम्पल विच हैव mentioned in your books. I have just taken few of them. Okay, so that was our Consumer Protection Act, and now we have concluded that this Consumer Protection Act. Thank you.